In the coming years, when some powerful nations like China and USA will witness a decrease in workforce, while India will have an increase. मॉडर्न सिटीज देखते हैं तो आई थिंक हंड्रेड्स अबव मॉडर्न सिटीज हैं मॉडर्न इंडिया के सिटी अंदर, ठीक के है। अंदर हो चुकी जैसे है। लाइक मुंबई है, पुणे है, गुड़गांव है। जैसे गुड़गांव को अब कर दिया है गुरुग्राम, कर दिया गुरुग्राम कर पुणे दिया। है, लाइक हैदराबाद बहुत। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? और मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। वेलकम टू अवर चैनल। तो मतलब ऐसा लगता है कि फॉरवर्ड हो गई हमारी वीडियो ना, बिल्कुल फास्ट बहुत फॉरवर्ड। ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गई। तो सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त है। आई होप आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो स्पेशली जो टाइटल हम लोगों ने लिया है, व्हाई इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। वाओ, मतलब पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा है। और वो मतलब वाई, मतलब क्यों, इंडिया ही क्यों, मतलब इंडिया की हम बात करते हैं जैसे वाई इंडिया ग्रेट, ठीक है। इंडिया क्यों ग्रेट है, लेकिन जैसे कि हमने लास्ट वीडियो पे अपने देखा था कि इंडिया भाई इसलिए इंडिया ग्रेट है क्योंकि इंडिया में बहुत सारी हमने वीडियोस वगैरह में देखी थी, इन्फॉर्मेशन वगैरह भी देखी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोगों को ऊपर यहाँ पर लिंक नजर आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड स्पेशली ऑल्सो। When we think of superpowers, the first name that comes to our mind is United States of America, followed by European Union and China, right? But there is another one country on this planet which is on the way to becoming a global superpower. This is India, मुंबई the fastest growing major economy in the world. The country is already considered as one of the potential superpower of the world. This potential is attributed to several indicators, the primary ones being its demographic trend and rapidly expanding economy and military. In this video, we are going to talk about some such primary points which will contribute significantly role in making India a global superpower in future. इकोनॉमिक बूम। In 1947, when India got independence from the British Empire, India was among the poorest country in the world. Even in 1991, India's economy was less than the economy of Paris and London, and today, India has more economy than the France and the UK. In 2014, the country was ranked 10th in the world, but now in 2022, India has become the fifth largest economy in the world with a huge GDP of $3.5 trillion. In just last 8 years, India has overtaken five major economies like Canada, Russia, Italy, France, and the UK, and this is really impressive. फिफ्थ नंबर पे इंडिया इकोनॉमी के India लिहाज is से। the fastest growing major economy in the world, and according to IMF, the country is on the track to become the world's third largest economy by 2027, surpassing Germany and Japan. India is already the third largest economy in the world in terms of PPP GDP with a huge GDP of $11.7 trillion. India is the second most populous country in the world and its potential is unlimited. India has the largest young force in the world, more than 50% of its population below the age of 25 and more than 65% of its population below the age of 35. In the coming years, when some powerful nations like China and USA will witness a decrease in workforce, while India will have an increase in workforce. Infrastructure and construction. Infrastructure has a huge role in the development of any country in the world, and modern India knows this very well. The country is focusing a lot on its infrastructure. India is home to the highest number of under construction mega projects in the world. The country is working on the biggest infrastructure project it has ever done in its history. A project that working on over 9,078 mega project with spending a huge amount of $1.5 trillion. The name of this massive project is the National Infrastructure Pipeline of India. And it is going to change everything from building a world-class infrastructure to better the quality of life of people. This $1.5 trillion will be spending over the course of 5 years starting from 2022 all the way to 2025. Along with this, India is working on many other mega projects like Bharatmala, estimated cost over $140 billion. Bharatmala is a road and highway development project aims to build a solid network of world-class road, highway and expressway across India. Sagarmala project, estimated cost over $130 billion. The main aims of the Sagarmala project is to increase the capacity of waterways and coastline and build the world-class infrastructure to the coastline so that the country's logistic cost can be reduced minimum and can be taken maximum advantage of coastline.
Delhi Mumbai Industrial Corridor, estimated cost over $100 billion. DMIC is an ambitious infrastructure project covering the 1,483 km length between Delhi and Mumbai. 100 Smart City, estimated cost over $100 billion. 100 Smart City is an urban development project with a mission to develop smart cities across the country, making them citizen friendly and sustainable. Along with this, India is working on many other mega projects by spending hundreds of billion dollars. Military power. After the USA, Russia and China, the Indian military is the fourth most powerful military in the world, and with a budget of $76.6 billion, India has the highest defense budget in the world. More than 1.45 million active personnels, more than 1.15 million reserve personnels, and more than 2.52 million paramilitary. The Indian military is the largest military in the world with over 5.13 million military personnels. India is also a nuclear armored country. The country holds some of the most powerful nuclear weapons in the world. The country is rapidly expanding and modernizing its military. India is the largest importer of arms in the world. The country alone accounting 11% of global imports. As well as India is one of the largest producers of arms in the world. India exports arms to over 45 countries. India is rapidly improving and modernizing its infrastructure by investing trillions of dollars. Due to this, the logistic cost of India is falling and companies are getting attractive to start their production in India. Even in 2021, India overtaken USA and become the second most attractive manufacturing destination globally. India has the world's largest chip workforce and Indian market is one of the biggest market in the world. As well as the government of India is giving $1 billion as initiatives to companies to start their business and production in India. Because of this, companies from all over the world are getting attracted towards India to start their business and production. India already among the world's top 5 most industrialized countries with an industrial output of over $900 billion and it is said to be third most industrialized country by 2030 with an expected industrial output of more than $3 trillion. Science and technology. Modern India has a strong focus on science and technology. India ranked third among the most attractive investment destinations for technology. India is the largest provider of IT service and the largest provider of software service as well as one of the largest producer of hardware and software. The world's fastest growing startup ecosystem. In 2014, India had only 400 startups and as of 2022, India has over 77,000 startups which makes India globally the third largest startup ecosystem in the world after USA and China. Most of them comes from tech and innovation field. The Indian Space Research Organization is among the world's top 5 most successful ISRO. space agencies. As of 2022, ISRO has successfully launched over 386 foreign satellites for 36 different countries and successfully launched over 134 Indian origin satellites. There are only 4 countries in the world that have developed advanced space weapon called anti-satellite weapon and India is one of them. India has capability to destroy the communication system of any country in the world by destroying their satellite in the space. India is among the world's 5 countries that have developed their own GPS navigation system. Other are USA, Russia, China and Japan. And among the world's 4 countries that have successfully reached Mars and Moon both. Other are USA, Russia and China. Space technology, military technology, pharmacy research, healthcare technology and innovations. India has made great progress in the field of science and technology and is performing excellently. Location. India lies in the South Asia portion of the Indian Ocean, a zone with unpredicted potential. American, African, European and Asian sea trade route passing through or close to Indian territorial waters. The central location of India is considered of great value as it helps India to keep a close contact for business purpose with America, Africa, Europe and Asia. Culture and tourism. India with its diverse and charming culture, art, music, history, spiritual and social model, Kailash witnessing the Temple growth Indians. of booming tourism industry. India is home to the rich culture and spirituality. No country in the world as diverse as India.
The country Golden has Temple. total 28 state and 8 union territories, and they all have their own culture, tradition, art, music, languages, costume, and food. And no country in the world is more colorful than बिल्कुल India. ऐसे ही है। Even India has entire colorful cities like Jaipur, the city of झांसी की ink, रानी, like Udaipur, the जयपुर, city of उदयपुर, white, Jodhpur, the Jodhpur, city of blue, जोधपुर, Jaisalmer, the city of gold, and Kanyakumari, the city of कन्याकुमारी, seven colors. वाओ, India is a whole world कन्याकुमारी, itself. झांसी की India has रानी, snowy हिमाचल Finland, प्रदेश, beauty like लद्दाख, Switzerland, desert like Arab, Desert of valley like Rajasthan, Africa, beautiful cities मनाली, like Europe, forest like Brazil, कर्नाटका, beaches like लक्षद्वीप, America, and इसलैंड। mountains like Japan. Even India Very has white nice, desert beautiful. also. वाइट डेजर्ट यार, Hundreds, thousands of beautiful वाओ, temples, टेम्पल historic कितने ब्यूटीफुल हैं यार। monuments, incredible architectural sites, and extreme beautiful hill stations like Shimla. Manali, Nainital, Simla, and Spiti Valley. Spiti India Valley. is just incredible. Spiti Valley is so much beautiful The यार। fastest growing major economy, the fastest growing major stock Really? market, the fastest growing startup ecosystem, the fastest growing major ऐसे ही industrial है। country, and home to the highest number of under construction mega projects in the world. There is no doubt that India is getting ready to become a global Wow. superpower. मतलब यार, इंडिया के बारे में जितनी भी बात की जाए वही बात है, तो सही कह रहे हैं आप। सीरियसली काम है। और इंडिया को एक्सप्लोर करना एक वीडियो में तो भाई बिल्कुल। मेरे एक मानना ऐसा है कि बहुत मुश्किल है। मतलब आप ये देखें ना कि इंडिया की बात हो रही थी यहाँ पर, मतलब इंडिया का देखो, इसने टाइटल बहुत जबरदस्त किया है, व्हाई इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर ग्लोबल सुपर पावर। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट में आप इंडिया की बात करते हैं कि जैसे 1947 में बात बहुत जबरदस्त है कि उस टाइम भारत सबसे गरीब देश था। ठीक है, क्योंकि पार्टीशन हुए, बहुत से क्राइसिस से पाकिस्तान और इंडिया दोनों गुजरे। बहुत ठीक है, गुजरे, हाँ जी। बहुत से इश्यूज आए, लेकिन उसके साथ साथ इनकी जीडीपी जो 1991 में आप देखते हैं कि किस तरह इकोनॉमी ऊपर गई है। और लाइक अगर अभी आप देखते हैं कि इनकी इकोनॉमी मतलब यूके, फ्रांस, मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज को इंडिया ने बीट कर दिया है। और 2027 के वो बता रहे थे कि जीडीपी जो है वो थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी बन जाएगी, लाइक मतलब अमेरिका और चाइना के बाद अगर किसी की बात की जाए तो वो तो डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की बात करते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर आप देखें ना कि अब इन बात हम करते हैं, जैसे लाइक हम उनकी इकोनॉमी को ले लेते हैं इंडिया की। ठीक है, वहां की अभी लास्ट में जो बता रहे थे, इसरो के बारे में बता रहे थे। इसरो स्पेस एजेंसी जो है भाई, उसने तो मैं कह दूं नासा को पीछे छोड़ना है, बल्कि छोड़ ही देना है। ट्रेडिशनल जो उनके कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात पहले करो ना, जी, कि वहाँ की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मतलब हाँ। बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं कि एक हब बन चुका है। लाइक अगर हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पर गूगल इंडस्ट्री इतनी बड़ा हब है। ठीक है, फिर अमेजोन की बात करें और इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज है यार, उनके एक हब बन चुके हैं। आप वहाँ की इंडिया की बिल्डिंग्स को देख लें यार, किस तरह की बिल्डिंग्स है। मतलब लक्षद्वीप वाली जगह जो है, लक्षद्वीप इसलैंड की बात आप कर लें। फिर मैं एक और बात करना चाहता हूँ, सॉरी आपकी नहीं मैं आपकी बात काट रहा हूँ। पहले तो मैं बात करूंगा इंडियन कल्चर की। ठीक है, इंडियन कल्चर मतलब मोस्ट फेवरेट है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई है तो अगर कल्चर की हम बात करते हैं तो वो इंडिया में मोस्ट फेवरेट है। देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर्स मनाए जाते हैं, लाइक देखो अब दिवाली वहां पर मनाई जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ एक होली स्पेशली बहुत ज्यादा, दुर्गा पूजा बहुत फेमस है। फिर रमजान भी वहां पर मनाए जाते हैं, नवरात्रि बनाई जाती है। तो इस तरह के बहुत से कल्चर्स हैं यार, मतलब मूवी में हमने देखा था ये सारे कल्चर्स। फिर सिखिज्म भी वहां पर रहते हैं, क्रिश्चियंस वगैरह भी रहते हैं, बुद्धिज्म भी रहते हैं, तो बहुत सारे कल्चर्स हैं। फिर आप देखें हिस्ट्री अगर आपको चाहिए खोजने के लिए तो सबसे पहले आपको इंडिया जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री है ना जो मतलब अभी भी सॉल्व नहीं हो चुकी है, मतलब नहीं हो सकी, क्योंकि बहुत ज्यादा। अब आप गोल्डन टेम्पल की बात कर लें, बहुत सारे टेम्पल्स हैं इंडिया के अंदर। और साथ साथ एक और मैं बात करना चाहता था, अगर आप टूरिज्म की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर टूरिज्म कहीं पर है तो वो इंडिया में जाते हैं, क्योंकि इंडिया में वो एक हिस्ट्री देखते हैं, इंडिया के पुराने मकानात देखते हैं, इंडिया के जो कल्चर है वो देखते हैं कि यार वो रंगोली जो होती है वो बड़ी खूबसूरत से बनाई जाती है। आउट ऑफ कंट्री से स्पेशल लोग आते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री बनाकर जाते हैं। बिल्कुल। और अगर आपको एक और बात बताऊं, मतलब इंडिया के रहने वाले अगर मतलब इंडिया में अपने आप को घूमना की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उनके लिए ब्यूटीफुल अगर कोई जगह है वो तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक ऐसी मतलब जगह है कि भाई जितनी जिसकी तारीफ की जाए वो स्पेशली कम है। ठीक है, साथ साथ अगर हम बात करते हैं मनाली है,
फिर जयपुर, जोधपुर, अगर आप इधर राजस्थान चले जाएं, ठीक है, जयपुर है, मतलब आपको हिस्ट्री मिलेगी वहां पर बहुत सारी जाकर, हिस्ट्री है। बहुत कुछ आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप मॉडर्न सिटीज देखते हैं तो आई थिंक 100 से अबव मॉडर्न सिटीज हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, जैसे लाइक मुंबई है, पुणे है, गुड़गांव है, जैसे गुड़गांव को अब कर दिया है, गुरुग्राम कर दिया, पुणे है, लाइक हैदराबाद बहुत मॉडर्न सिटी बन चुकी है। हैदराबाद भी है, सो व्यूअर्स, आप लोग ये बताएं कि आप लोग की क्या मुझे राय तो है। यार वो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली, जितना प्यार जितनी मोहब्बत देना चाहते दिल खोल कर देखिए, फ्री ऑफ कास्ट है। अभी कुछ कहना चाहती हैं? शिमला है, शिमला की क्या यार जबरदस्त ऊटी, हाँ तमिलनाडु में अगर कोई जगह है ना तो वो ऊटी, ऊटी है। क्योंकि ऊटी के जो रेलवे का फाटक गुजरता है ना, तो भाई वो बड़ा एक ब्यूटीफुल नजारा लगता है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो करते हैं खत्म, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाजत, स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज।